हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राजा ट्यूटोरियल्स। तो आज आम देखमा जे 2023 रे +3 5 सेमिस्टर रो कोर पेपर 11 रे आसीथिबा समस्त क्वेश्चन को चलନ୍ତୁ डिस्कशन करवा। इना पहला क्वेश्चन कहाँ आसीजे? पहला क्वेश्चन आसीजे तो पहला को बोल जे आंसर ऑल क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो इथरू काम बोल जे इथरू तुम्हें करेक्ट ऑप्शन के चूज करी आंसर दियो बोल कहूचे सबू क्वेश्चन रो। तो चलो तुम पहला क्वेश्चन काना, व्हाट वाज स्टेट जनरल? व्हाट वाज स्टेट जनरल? तो आंसर हवा a political body. Next question, who had told after me deluge? Who had told after me the deluge? এটা কইছিলে কে? লুইস 15। লুইস 15। Next question, what did the red cap worn by Sans Clotes in France symbolize? What did the red cap worn by Sans Clotes in France symbolize? तार आंसर हला लिबर्टी। आंसर कना एटा लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर नेपोलियन became the first consul? In which year Napoleon became the first consul? The answer है 1799 AD। 1799 AD। Next question, which of these provisions were passed by the Assembly on the night of 4 August 1789? Which of the provisions were passed by the Assembly on the night of 4 August 1789? The answer है abolition of feudal system of obligation। Okay, next question, which of the following was not part of the Napoleonic Code? The answer है women suffrage। आंसर है women suffrage। Next question, who said when France sneezes the rest of Europe catches cold? Who said when France sneezes the rest of Europe catches cold? The answer है Metternich। Next question, who was the ruler of France at the time of July Revolution of 1830? Who was the ruler of France at the time of July Revolution? Answer Charles X। Next question, why the revolution of 1830 and 1848 so widespread? Why the revolution of 1830 and 1848 so widespread? The answer है people oppose nationalism। People oppose nationalism। Next question, Karl Marx explained the process of class struggle with the help of which one of the following theory? Karl Marx explained the process of class struggle with the help of which one of the following theories? Answer is dialectical materialism। Dialectical materialism। The next question, who among the following was not associated with the unification of Italy? Who among the following was not associated with the unification of Italy? Answer है Mussolini। The next, Bismarck largely united Germany by
accumulating German theories under the flag of which German state? Answer है प्रुसिया. तो नेक्स्ट आम पार्ट 2 को जीवा. पार्ट 2 रो प्रत्येक क्वेश्चन रो मार्क होची 2 मार्क. तो लिखा है आंसर एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन 2 to 3 सेंटेंस इच. प्रत्येक क्वेश्चन रो 2 ରୁ 3 धाड़ी मध्य 8 टी क्वेश्चन रो केवल 8 टी क्वेश्चन रो उत्तर लिख बोली कहूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन है देखुन. हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रांस रिवोल्यूशन टू व्हिच डायनेस्टी डिड ही बिलोंग. तो 2 मार्क के क्वेश्चन जब मुझे आंसर कही बोले भिडियो लंग हो से आपण मैंने यही क्वेश्चन टी को सर्च करे कि बही खोजी ने. मुझे खाली क्वेश्चन कही नौ देखो. सेकंड क्वेश्चन व्हाट डिड Versailles symbolize, of which date storming of the Versailles took place. Next question, who were writers of the books named The Spirit of Laws and The Social Contract? The next question, when was the National Convention in France established and in which year was it disbanded? Okay. Next question, when did the Battle of Trafalgar take place? Who was the hero of that war? The next question, when was the Congress of Vienna held and who represented France at the Congress? Okay. Next question, who were the Luddites in Great Britain? What was their aim? Next question, who was the founder of Young Italy? In which year was it found? The next question, when did emancipation of serfs take place in Russia? Who was the Tsar of Russia at that time? The next, write the name of 2 exponents of German idealism. तो ये पार्ट 2 सरी आई आम रखु जे 8 टी क्वेश्चन आंसर लिखे. पार्ट 3 को आसवा. पार्ट 3 लिखा है कौन देखो. राइट नोट ऑन एनी 8 ऑफ फॉलोइंग विदिन 75 वर्ड्स इच. तो पहला क्वेश्चन कौन अच्छे देखो. टेनिस कोड ऑथ, रेन ऑफ टेरर, देन मिराबेउ, देन कॉन्टिनेंटल सिस्टम, नेपोलियनिक कोड, जुलाई ऑर्डिनेशंस, मेटोनिक, गारिबाल्डी, काउंट कावोर, फ्रांको-प्रूसिया वार ऑफ 1870 to 71. And next question, पार्ट 4 बा पार्ट IV को देखा कौन है. आंसर ऑल क्वेश्चन विद इन 500 वर्ड इज. प्रत्येक क्वेश्चन रो प्रत्येक प्रश्न रो 500 वर्ड रे आंसर लिखु मैंने कहूँ है. तो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छे यार गोटे क्वेश्चन रो मूल्य केते 7 मार्क. देखो, डिस्कस द सोशल कजेस ऑफ द फ्रांस रिवोल्यूशन. और रे कौन देछि write an essay on the role of women in France revolution. The next question, analysis the work of the Constituent Assembly from 1789 to 91. Next question, और देछि कोन examine the achievement of Napoleon as an empire builder. The next 6 number कोन देछि, where is the period between 1815 and 1848 in Europe called the age of Metternich. The next question,
narrate the causes and effect of July revolution. Then next question, describe the condition of agriculture in England during industrial revolution. और कौन दीजिए, examine the role of Bismarck in the unification of Germany. तो आपण माने 5 नंबर सेमिस्टर यहाँ हूँ कौन राजेंद्र यूनिवर्सिटी सब क्वेश्चन जहाँ 2023 रे इथर आसीथिला। तो आपण माने समस्ते जानी पारिथिबे एथर जहाँ सब क्वेश्चन आसीथिला तो आपण माने पाई जाइथिबे। तो यदि आपण माने ए भिडियोटी को देखुछंती तो लाइक करंतु, यदि पसंद आसी तो लाइक करंतु, आ चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, आ दयापूर्वक आपण मित्र गोटे मित्र पाखक आपण शेयर टी कर दिंतु। धन्यवाद। जय हिंद।